our focus and get you this big breaking update that is coming in as far as the cough syrup controversy is concerned. It has now reached the apex court. A public interest litigation has been filed seeking a nationwide probe into the deaths allegedly linked to contaminated cough syrups. The PIL has called for the formation of a National Judicial Commission to oversee the investigation and has demanded that the probe be handed over to the CBI. The plea also seeks mandatory quality checks for all cough syrups manufactured and sold across the country. So that is the latest that is coming in. Supreme Court will be looking into this PIL. Let me quickly go across to Harish, my colleague, who has been tracking the developments in the top court. Harish, get us more details of this particular PIL that has now been filed, seeking more action and more stringent measures to take place as far as the regulation of the quality of cough syrups is concerned. Yes, as for this particular public interest litigation filed by a PIL activist and Supreme Court lawyer Vishal Tiwari, he has brought the cough syrup controversy to the Supreme Court by through filing a PIL. He seeks a probe by a National Judicial Commission or an expert committee, and says that all, if any FIR has been registered so far and probe is being conducted, all these probe be transferred to the CBI. And the PIL filed by the Vishal Tiwari also seeks mandatory quality check of all cough syrup. And for the benefit of viewers, that we read out from the petition, it says issue a writ of mandamus or any other appropriate writ or directing the respondent to constitute a National Judicial Commission or expert committee headed by a retired judge of this honorable court to conduct a comprehensive inquiry into the manufacture, regulation, testing and distribution of contaminated cough syrups containing DEG and EG, which have resulted in multiple child deaths in Madhya Pradesh and other states of India, and to suggest measures for the safety and standard of drugs/medicines, and also issue a direction to respondents to transfer all the pending FIRs lodged in connection with the deaths of children in different states to the Central Bureau of Investigation. And also say this is a call for mandatory quality checks as far as all the cough syrups being supplied across the country is concerned. Back to you. All right, Harish, thanks very much for joining us at the moment, getting us those details. Viewers, we are also getting a breaking update from Madhya Pradesh. This is regarding the cough syrup case in Chhindwara. Another death has been reported, bringing the total number of deaths in Chhindwara to 15 now. The daughter of Naveen Deharia, who's a resident of Tamia, passed away on Monday night. My colleague Makran is with us to get us more on this unfortunate development that has now taken place. Makran, get us more details. एक और डेथ रिपोर्ट की गई है. एक और बच्चे की डेथ रिपोर्ट की गई है. नवीन डेहरिया नाम के शख्स थे, जिनके 18 माह की बच्ची थी, जिसकी मौत हुई है. सोमवार रात को नागपुर के एक अस्पताल में बच्ची ने दम तोड़ दिया. ये 15वीं मौत है छिंदवाड़ा में, और अब तक 15 से ज्यादा मौतें रिपोर्ट हो चुकी हैं. अगर बैतूल की मौतों की बात की जाए, पुष्ट हैं, वो भी 2 मौतें अगर जोड़ ली जाए तो 17 मौतें इस पूरे मामले में कही जा सकती हैं. अभी फिलहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर आए थे. सोमवार को उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और कार्रवाई के बारे में जानकारी दी कि जो फैक्ट्री सील की गई है कांचीपुरम में, उसके ऊपर भी FIR की गई है. जो डॉक्टर जिन्होंने कफ सिरप लिखा है उनके ऊपर भी FIR दर्ज की गई है और कार्रवाई हो रही है. लेकिन जो परिजन है वो संतुष्ट नहीं है. उनका कहना है कि बच्चों की मौत जिस तरह से हुई है तो जाहिर है कि एक्शन पर्याप्त नहीं है. कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ा एक्शन होना चाहिए. और इस पूरे मामले में लगातार पूरे स्टेट में छापेमारी कार्रवाई भी चल रही है. छापा मारकर इस कफ सिरप के बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है, और कहीं भी अगर ये प्रतिबंधित कफ सिरप है तो उसको भी जब्त किया जा रहा है. इसके अलावा भी अन्य कंपनियों के कफ सिरप की भी अब सैंपलिंग हो रही है, और अगर वहां पर किसी भी कफ सिरप में किसी केमिकल की मात्रा अपर्याप्त पाई जा रही है या ज्यादा पाई जा रही है तो उसको भी सील किया जा रहा है या वहां पर भी कार्रवाई की जा रही है. एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन बच्चों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये तय करना अभी तक बाकी है. जी मकरन, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. माय कॉलीग मकरन गेटिंग अस मोर डिटेल्स ऑफ दिस unfortunate death has taken place. Of course, increasing the death toll in this entire cough syrup controversy. Meanwhile, authorities have been investigating and doing quality checks simultaneously after this entire controversy erupted. We'll keep getting you details on this, viewers. It's time for a short